Well, that was the External Affairs Ministry's special briefing on the state visit of the Seychelles President Ermeni to India, and the Foreign Secretary Vikram Misri was briefing the media. Now, both countries have a strong foundation in their relationship as maritime partners and neighbors, and the highlights of this meeting were a decision to give $175 million special economic package to Seychelles. There will be development projects which will be identified by Seychelles. There's going to be cooperation in food security, in hydrographic cooperation, in the blue economy. Health is also a priority sector, is what the Foreign Secretary said. 10 ambulances have been gifted to Seychelles, and there is also the training of Seychelles civil servants, which will take place. An MoU has also been signed on digital transformation. Let's continue with the news here on DD India. Prime Minister Narendra Modi met the Seychelles President, Dr. Patrick Ermeni, at the Hyderabad House. This happened in New Delhi on Monday, and during the state visit to India, he's on a state visit till February 10. Prime Minister Narendra Modi held bilateral meeting with the presidents of Seychelles at the Hyderabad House. The two leaders also held a delegation-level talk. This also happened at the Hyderabad House. They discussed regional and international issues of mutual interest. Both leaders reviewed the entire process, all aspects of the bilateral relationship. And they discussed cooperation in development partnership, in capacity building, in health infrastructure, in blue economy, renewable energy, maritime security, people-to-people ties as well. Prime Minister Modi and President Ermeni, they adopted the joint vision for sustainability, economic growth and security through enhanced linkages. India and Seychelles they exchanged, 7 MoUs in the presence of the Prime Minister Narendra Modi, and the President of Seychelles, Patrick Ermeni. And this was at the Hyderabad House. India announced a special package of US dollars $175 million for the development cooperation projects, capacity building for civilians and defense officials, and maritime security. विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। भारत और सेशेल्स की साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आज हम इंडिया सेशेल्स जॉइंट विजन जारी करने जा रहे हैं। ये विजन आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग का रोडमैप बनेगा। Cooperation in the maritime and scientific domain was reinforced through the signing of the Memorandum of Understanding on Technical Cooperation in Ocean Observation, Ocean Services, Capacity Building, Data Sharing, and Marine Scientific Research. This instrument reflects our shared interests in advancing marine science, strengthening technical and analytical capabilities, and support evidence-based ocean governance in the Indian Ocean. We also exchange perspectives on regional and global issues of mutual interest, including developments in the Indian Ocean region and India's growing role in multilateral forums such as the G20 and BRICS. Still to come here on DD India Live.
Prime Minister Narendra Modi interacts with students in continuation of the 9th edition of the Pariksha Pe Charcha 2026. Seahawks claim their second Super Bowl title. Geopolitics and trade deals. Economic challenges amid development. Hard work and the path to prosperity. It's the economy always. Between walkers, money is what money does and says. Supply creates its own demand. Between the bulls pulls and bears tears. When supply chains grow and India rises to the podium. We'll get you centered with the economic brief at 8 p.m. every Thursday on DD India. You're watching DD India Live. I'm Mark Lynn. Thousands gathered on Monday for the Bangladesh Nationalist Party chief and Prime Ministerial hopeful Tariq Rahman's campaign entered its final day ahead of the February 12 vote. The South Asian nation is set to elect a new parliament with the BNP led by Rahman, who returned in December after 17 years in exile, widely tipped as the front runner. Now, the rally marked a significant moment in the closing hours of campaigning, underscoring the intensity of the contest as Bangladesh prepares for polling day. Prime Minister Narendra Modi interacted with students from Coimbatore, from Raipur, Devmogra and also from Guwahati. This was in the second edition of Pariksha Pe Charcha 2026. The Prime Minister inspired the students, urging them to embrace fearlessness as well as to take an initiative. The Prime Minister emphasized that true leadership, it lies in guiding others with understanding, not imposing your ideas. इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे, मैं करूँगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूँगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो 4 लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज़ है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। Prime Minister Narendra Modi recalled the Pal Kshatriya incident, highlighting the significant role played by the tribal community in India's freedom struggle. Emphasizing inclusive development, he also referred to the Prime Minister Janman Yojana, in fact launched to support the tribal regions. सर, हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल क्षेत्रीय की घटना मालूम है? हाँ है। वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था,
तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, ये बहुत सारा बदलाव आया है। तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए। तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज़्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है। तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। Prime Minister Narendra Modi emphasized the importance of balancing education and sports in life. He said education is essential both for personal growth as well as for society, and these should never be underestimated. मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती हूँ? शिक्षा की जीवन में भी ज़रूरत है, समाज जीवन में भी ज़रूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना वढ़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। In neighboring Nepal, students from the Kendriya Vidyalaya there in Kathmandu, they watched episodes 1 and 2 of Pariksha Pe Charcha by Prime Minister Narendra Modi. Students from Kendriya Vidyalaya in Kathmandu shared their reactions after watching these episodes. They said that they felt proud, motivated and inspired by the Prime Minister's guidance and the tips on managing exam stress, balancing hobbies as well, and developing life skills. After seeing Pariksha Pe Charcha on 6th of February 2026 and 9th of February 2026, I felt immense pride and joy for my nation. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, was speaking on the topic of exams and how they should be celebrated instead of feared. He spoke about the faces of the teachers, the students and the parents regarding what they feel about exams and how we should conquer them on our own terms, and how we should develop the ability to focus the pressure and the new developments in education as we grow up. After seeing Pariksha Pe Charcha on 7th and 9th February, I felt greatly motivated and inspired because our Honorable Prime Minister of country, Shri Narendra Modi, he guided students very well on how to manage hobbies as well as exams and how to combat exam stress and avoid the pressures that most students experience during exams. He told us important life skills and he mentioned that we should balance studies as well as life skills. After seeing the Pariksha Pe Charcha on these 2 dates, I was, first of all, this is a face of the Prime Minister that we do not usually get to see, and it was great to know of the person behind that really successful and amazing man that we see on television. We actually got to see more of him, and the way that he talked to the students was extremely, it made me very inspired, because the way the tips that he gave, they were of great use. And some sports news now. The Seattle Seahawks, they've coasted to Super Bowl glory, routing the New England Patriots 29-13 as Sam Darnold sealed his journey from flop quarterback to conqueror of the NFL's biggest prize.
Brushing off a reputation for wilting in big games, the journeyman quarterback, Donald, he threw for a touchdown and some 200 yards on the grandest stage of all to give the Seahawks their second ever trophy. The victory was buoyed by a dominant defensive display and kicker Jason Myers, 5 field goals, the most ever by one player in a Super Bowl. Fans poured out of Levi's Stadium in excitement after the Seahawks claimed the coveted title. This capped off a season where expectations were exceeded by a formidable defensive display. Fireworks lit up the sky above the stadium as fans celebrated a season many had expected to be transitional, but instead culminated in a championship victory. And that's all we have with this edition of DD India Live. Let's know your thoughts on the news of the day. For those of you on the go, get the latest news and updates from India and across the world on the DD India mobile app, available on Android and iOS platforms. Scan the QR code and download it now. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Mark Lynn from all of us here in Delhi. Thank you for watching DD India Live. Namaskar.